आगाजी को रहा वो देखो हवलदार साहब उड़ा लल। ए हराम का बच्चा बात तक किधर है? उधर रुको। ए रुको रुको रुको। किधर भागते हैं? किधर भागते हैं? मामू भांजे को रूस लेके जाएगी। बड़ा मठोल मालूमस। उन दोनों पर मेरी पहले से ही नजर थी। अब तू बता क्या लगते हो तेरे? हवलदार साहब क्या हवलदार साहब देखा क्या प्लान बनाया था आपने कामरेड? अनपॉलिटिकल सब चौपट कर दिया। अब बेवकूफ गाइड सब कुछ उगल देगा हम लोगों के बारे में। अरे उससे कुछ पता होगा तब ना। मैंने उसे थोड़ी बताया किसे सरहद पार करानी है। उत्तम चंद जी पुलिस का डंडा पड़ता है ना तो तजुर्बेकार कहती है। कत्ल के जुर्म में 2 बार जेल हुआ है। तजुर्बेकार कैदी क्या होता है तुझे क्या पता? 2-4 दिन पिट पिटा लेगा पर मुंह नहीं खोलेगा। कुछ भी हो उत्तम चंद जी, उस पुलिस वाले पर हमारी असलियत जाहिर हो चुकी है। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी हम पर शक होने लगा है। इससे पहले कि ब्रिटिश पुलिस आपके घर आ जाए हमें फौरन यहाँ से चलना होगा। सुभाष बाबू जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? अब तो ना आगे जा सकते ना पीछे। मिस्टर मल्होत्रा प्लीज। कोई फिरंगी मेम साहब आपसे मिलने आई है। मैं देख के आता हूँ। Sorry, madam, you had to wait for me. What can I do for you? I'm Signora Quaroni, wife of the Italian ambassador. Tell me the message. These are the formal papers. The Axis powers will be happy to welcome Mr. Boss. Ask him to follow the instructions in the attached note. मुझे ये ठीक नहीं लग रहा सुभाष बाबू। आपको रूस ही जाना चाहिए था। मैं भी वही चाहता हूँ, पर रूस क्या चाहता है तुम भी नहीं जानते। मुझे डर है कि फासिस्ट इटली और जर्मनी वाले आपको भी वैसे ही ना नचाएं जैसे वो पागल पीरीपी फकीर को घुमा रहे हैं। बरसों से अंग्रेजों की नींद हराम करने वाला इतना पागल भी नहीं हो सकता। खैर रूस ना सही जर्मनी ही सही, हिंदुस्तान की आजादी के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार हूँ। लाइए। नहीं चलो। उत्तम चंद जी, आपने तो मुझे अपने एहसानों से लाद दिया है। पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगा। ऐसा मत कहिए सुभाष बाबू। एहसान तो आपने किया हमारे साथ रहकर। आपकी सेवा करके ऐसा लगा जैसे आजादी के काफिले में हम भी 2 कदम साथ चले। सुभाष जी नाना करना तो अनुरब दा वास्ता। ये 3 गिन्नियां मेरी मां देता सी। ये मेरी तरफों हिंदुस्तान की आजादी के लिए साडे वतन दी सदके। Here is your new passport. Orlando Mazzotta. But that's not my name. The Russians are reluctant to give you even a transit visa, so you have to travel as Mazzotta, through Russia to Germany. From now on, you will be Count Orlando Mazzotta, radiotelegraphist. First Muhammad Ziauddin, an insurance agent. Then Ziauddin Khan, a mute tribal Pathan. And now an Italian count. क्या क्या न हुआ है वतन तेरे प्यार में। I hope you have a good journey, Signor Mazzotta. Thank you, Signor Quaroni. Now you will need this. Oh. Thank you, Signora. Thank you, Signor. तलवार, मैं पहुंचते ही खबर कर दूंगा। काश मैं भी आपके साथ चल पाता, कम से कम मॉस्को तक। मॉस्को फिर चले जाना कॉमरेड। अभी मेरा ये संदेशा फॉरवर्ड ब्लॉक के साथियों को कलकत्ते पहुंचा दो। जी। पठान की आंखों में आंसू। हम मिलेंगे कॉमरेड, जरूर मिलेंगे, और आजाद हिंदुस्तान में मिलेंगे।
सूर सलाम। लाल सलाम। मंजिलें कभी क्या मिलेंगी हमें, होगी क्या सहल कभी जो राह है कड़ी, आज हर जवाब हमको मिल जाएगा, आ गई है आज फैसले की घड़ी। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। स्वामी, तुम मुझे उस इटालियन से क्यों मिलवा रहे हो? कुछ नहीं होने वाला। नहीं यार, देखो हिज एक्सेलेंसी ओरलैंडो माज़ोट्टा बहुत बढ़िया आदमी है। क्या हिज एक्सेलेंसी लगाए हुए हो? आखिर जर्मन इतना क्या एक्सेलेंट है उनमें? एक बार मिलोगे तब भाई पता साहब। लगेगा तुम्हें। बहुत। आप हिंदुस्तानी हो? हाँ जी सरदार जी, सत श्री अकाल। सतनाम वाहेगुरु। अपनी जवान सुन के कालजा ठंडा हो गया पाजी, वरना इस प्रदेश में जंगी कैदी को पूछता कौन है। POWs हो? हाँ जी, अफ्रीका के मोर्चे से गिरफ्तार हो के आए हैं। इस बेचारे गुरबचन के आइडेंटिटी पेपर गुम हो गए हैं। अब नवे बनाने के लिए ये अंग्रेज और जर्मन फुटबॉल से खेल रहे हैं हमारे साथ में। ये देखो जी, 2 दर्जन फार्म से दिए हैं भरने के लिए। पाजी हमें तो यहाँ की जबान ही नहीं आती। तो आप फिक्र मत करो, हम भर देंगे। मेहरबानी। आबिद, लौट के भर देना। हिज एक्सेलेंसी वक्त के बहुत पाबंद है। आ जाओ। रुको। क्या नाम? हाँ जी, गुरबचन सिंह मांगट। सिंह मांगट। उम्र? 21 साल। पिताजी का नाम? आबिद। आया। ऑरलैंडो मात्सोटा। आबिद, चलो। हेलो योर एक्सीलेंसी। हेलो स्वामी, अकेले आए हो या ले आए आबिद हसन को भी? सुभाष बाबू। ऑरलैंडो मात्सोटा। यस यस योर एक्सीलेंसी। चाय पियोगी? 5 साल हो गए ना हमें मिले। तब तुम वॉलंटियर हुआ करते थे कांग्रेस सेवा दल के, है ना? सर आपको याद है? तुम्हारे जैसे जोशीले वॉलंटियर को कैसे भूल सकता हूं। गांधी जी के आगे पीछे भागते रहते थे तुम। सर मैं तो उनकी एक आवाज पे जेल भी चला गया था, लेकिन जब उन्होंने अवन से समझौता कर लिया, मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ जर्मनी आ गया। इतनी सी बात पे मैदान छोड़ के भाग गए? नहीं सर, मैदान छोड़कर भागने वालों में से मैं नहीं हूं। तो हिंदुस्तान की आजादी के लिए हम यहां कुछ करें तो तुम हमारा साथ दोगे? जी यस योर एक्सीलेंसी। लेकिन हम करेंगे क्या सर? कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खोलेंगे? नहीं, कांग्रेस के तरीकों में अब कोई दम नहीं रहा आबिद। हमें अपनी फौज बनाकर हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ेगा, और जर्मनी इसमें हमारी मदद करेगा। लेकिन सर जर्मन तो अंग्रेजों के मुरीद है, वो सच्चे दिल से हमारी मदद नहीं कर पाएंगे सर। सर आप बताइए काम शुरू कब करना है सर? अभी से आबिद, काम बहुत है और वक्त बहुत कम। नंब्यार आबिद हसन। आबिद, मिस्टर नाम्ब्यार। हेलो आबिद। सर पेरिस से आए हैं हमारे साथ काम करने के लिए। सर। स्वामी, हमारे मेमोरेंडम का ट्रांसलेशन हो गया? यस सर। सर मेमोरेंडम किस बारे में? हमने इस मेमोरेंडम में हिटलर से आजाद हिंदुस्तान की आरजी हुकूमत के लिए मान्यता मांगी है, जिससे यहां कैद हिंदुस्तानी सिपाहियों को साथ लेकर हम अपनी फौज खड़ी कर सकें। आबिद, जिस दिन हमारी यह फौज सेंट्रल एशिया से होते हुए भारत के दरवाजे पर दस्तक देगी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिंदुस्तानी सिपाही नहीं, पूरा मुल्क उठ खड़ा होगा आजादी के नाम पर। कम इन। सुभाष बाबू, आपने किसी फ्रॉलाइन एमिली शेंकल को बुलाया था, बाहर खड़ी हैं। वो आ गई? जी। भेज दो। You had advertised for a secretary. Yes, to help me with my book.
Please. I'm sorry you had to make a second trip. I hope it wasn't too much trouble. Oh, but it was. My father wouldn't let me come again to see a strange Indian man all by myself. So how did you manage to come then? When I saw you the first time, I could tell that you were a different kind of person. Different kind of person. You seem to know enough English. Do you know anything about India? Yes. There are many Maharajas with fabulous jewels and elephants and tigers and snakes. And it's very hot there. People don't wear any clothes. Do I look like a Maharaja or a snake? And look, I'm fully clothed. I have a lot to learn then. The job is yours. Thank you. Won't you sit down? You should stop wasting money on unnecessary gifts. I've told you this before. It's not a gift. Just your old long coat that I kept safely for you. You kept it all these years? I've kept every scrap that was touched by you. And how's your mother and your sister Lotte? They are all fine. But first things first. When do I begin to work? So you remembered to bring this old machine with you? Yes. Have you remembered what you promised to bring last time? Glass bangles from India. I thought you were no longer the silly little girl I knew. Come, let's begin to work. I'm sure there's a lot that has to be done. First, we have to make notes for our meeting with Foreign Minister Ribbentrop. Hi, Litter. Vande Mataram! What does it mean? Hail the motherland, sir. Your Excellency, I hope we can clear the air in our meeting today. You will be pleased to know that we are actively considering your memorandum, Herr Boss. But we do need a few clarifications, Herr Boss. What do you think would happen if the British were suddenly to leave India? Naturally, a national government would be formed. With you as the leader? No. The leader will be elected democratically by the people of India. But how will you govern? Aren't there too many religious differences? Won't there be a chaos? Many religions, yes. Chaos? No. We have lived with many religions for centuries, well before the British colonized us. But that's besides the point. What I want immediately is recognition of India as a free nation by the Third Reich. Italy and Japan are both willing, and I'm sure the Soviet Union will consider it. It's not that simple. You see, the Führer believes that the British have done a great deal to civilize India. Civilize India? Perhaps the Führer isn't aware that Indian civilization goes back several thousand years. We understand your apprehensions, Herr Bose, but the question is, how will the unarmed masses of India defeat the army of the powerful British Empire? But the might of this empire rests on their control of India. And how do they control India? They hold India through force of arms with an army of Indians. After all, there are only 70,000 British soldiers in India. The rest are Indians. We only need to raise an army of 50,000 men to liberate India. But where will these men come from? From the Indian prisoners of war here in Germany and in Italy, as I have stated in my memorandum.
Once they learn that the Axis powers have recognized our government in exile, they will definitely fight for their motherland rather than be mercenaries for their British masters. And you will take this army all the way to India through Russia and Afghanistan? Yes. When I meet the Führer, I will give him my detailed plan. It is imperative that I meet him as soon as possible. We are doing our best. I will be frank with you, Herr Bose. The Führer gets the impression that Indian leadership is not well disposed towards Germany. Yes. There is that feeling since the Nazis consider Germans to be racially superior. This hasn't gone too well with us. And the negative remarks about Indians in the Führer's book Mein Kampf has not helped matters. We realize your anxiety on this matter, but I advise you not to raise this matter with the Führer if and when you meet him. You should understand that you cannot start any activity here unless the Führer is in your favor. You mean you could put me in prison if I do not agree to work on your terms? Certainly not, Your Excellency, but you could be incapacitated and will have to remain inactive. If I wanted to remain inactive, I could have remained in a British prison. I would rather go elsewhere or even back to India and fight from there. But, Your Excellency, even for leaving Germany, you will require our permission. Isn't that so? Herr Kepler, I have heard a lot about your Gestapo. I don't know whether they're present in this room too. But believe me, the British CID is no less efficient and ruthless. But I have foiled them and escaped. Herr Bose! Would you come with me in my car? Of course. आप लोग चलिए. जी sir. In a country where no one trusts anyone else, you will understand why I can talk without fear only in a moving car. I'm not unaware of the eyes and ears of your Führer. Let me warn you as a friend. Do not pin too much faith on the Nazis. Their goal and your goal is not the same. Indians and the other Asiatics count for little in their scheme of things. After the remarks you made, it appears to me that a meeting with Hitler would be difficult. If that's how you feel, why are you working for the Führer? My only loyalty is to my fatherland, Herr Booth, and not to any leader. But I cannot reveal this attitude of mine to anyone. Hitler has his spies everywhere. I'm grateful you have opened your heart to me. Be assured, I will not compromise you in any way. You smoke? No thanks. सुभाष बाबू, आपको नहीं लग रहा है जर्मन भी हमें इधर से उधर टहला रहे हैं? इससे तो अंग्रेज अच्छे थे सर, सीधी सीधी हरमजगी करो। इस तरह तो ना हमें खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो तुम हज क्यों नहीं कराते? शायद खुदा ही मिल जाए। हज? मैं हाजी जैनुल आबिदीन हसन सफरानी। सर अल्लाह मियां भी सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। आप क्या जन्नत में मेरी रिजर्वेशन कराने की सोच रहे हैं? वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। मैं तो क्या, खुदा भी तुम्हें जन्नत नहीं दे पाएगा। थैंक यू सर। मुझे पता था आपको मेरी नेकी पर पूरा यकीन है। फिर भी मैं तुम्हें मक्का भेजूंगा जरूर। मक्का? क्यों? वो इसलिए कि हज पे हर साल हजारों हिंदुस्तानी जाते हैं। अगर तुम वहां गए तो उन लोगों तक हमारी आवाज पहुंचेगी। और दूसरे, मिस्टर जिन्ना को यह गलतफहमी नहीं रहेगी कि उनके एक इशारे पे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी कहना बंद कर देंगे। ये तो बड़ी दूर की कौड़ी निकाली आपने सुभाष बाबू। लेकिन क्या मैं यहाँ आसपास रहकर कोई काम का काम नहीं कर सकता? ओए, सच है कि हमने ब्रिटिश सरकार का नमक खाया और किंग जॉर्ज के लिए लड़ने का अहद भी उठाया है, पर फिर भी इनकी बात तो सुन लो। हमने नहीं सुनी इन गद्दारों की बात। गद्दार? यानी 1857 में लड़ने वाले सिपाही भी गद्दार थे? उन्होंने भी तो कंपनी सरकार के लिए लड़ने का अहद उठाया था, पर बेवकूफ नहीं थे और ना ही गद्दार थे वो लोग। खुद अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के बजाय वो भारत माता के सच्चे सपूतों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। और पता है क्या हुआ था उनका? तोपों से बांध के उड़ा दिए गए थे। अगर तुम्हें डर है कि अपने मादरे वतन के लिए लड़ते हुए तुम
तोपों से उड़ा दिए जाओगे तो पड़े रहो यहाँ गुलामों की तरह। मेरे ख्याल से मुझे एक बार जवानों से मिलना चाहिए, अकेले। नो सर, उनका आज का मूड देखने के बाद ये खतरा नहीं ले सकते हम। खतरों से डरेंगे तो अपनी फौज कैसे खड़ी कर पाएंगे? आप लोगों की यही जिद है तो मैं कहूंगा कि कुछ जर्मन गार्ड साथ ले लीजिए। पहरेदारों की जरूरत दुश्मन से मिलते वक्त होती है, अपनों से नहीं। ओए, क्या लेने आए हो यहाँ पे? जान प्यारी है तो भाग जाए यहाँ से। जर्मन के जासूस, चले जाओ यहाँ से। बोली से तुम गोरखा लगते हो। कहाँ के हो? नेपाल या बंगाल? कालीपुंग से सर। जय भवानी। जय भवानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ के हैं जनाब? बंदा मेरठ का बाशिंदा है जनाब। वही मेरठ जहाँ से 1857 में जंग आजादी का ऐलान हुआ था? जी हाँ, वही मेरठ। और मेरे दादा जान को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था इन अंग्रेजों ने। और तुम उन्हीं के कातिलों के साथ काम कर रहे हो? क्या जवाब दोगे अपने दादा जान को कयामत के रोज? कसम है मुझे अपने दादा जान मरूम की, अगर मौका मिला तो मैं भी मारूंगा इन फिरंगियों को। तो आज वो मौका आ गया है जब हम सबको मादरे वतन के लिए लड़ना होगा। भूल जाओ अंग्रेजों को दिया हुआ कौल। करबला के मैदान में रसूल अकरम के नवासे इमाम हुसैन ने हक की जंग लड़ते हुए खुद अपने घरवालों की कुर्बानी दे डाली, लेकिन सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। वीर अर्जुन भी अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने दादा भीष्म पितामह के प्रति प्रतिज्ञा से बंधा था, पर अर्जुन ने सच्चाई का रास्ता चुना। फिर भले ही उसे उन लोगों के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा जो कल तक उसके अपने थे। आज भारत माता हमें उसी हक और सच्चाई की जंग लड़ने के लिए पुकार रही है। आज आपको तय करना है, आपको शहीद होना है या यहीं इसी जेल में सड़ सड़ के मरना है। नहीं जी, मरते तो बुज़दिल हैं, हमें तो शहीद होना है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु की कसम खाके ये अहद उठाता हूँ कि आज से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरपरस्ती में आजाद हिंद फौज के परचम तले अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ही लड़ूंगा। इस कसम की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहूंगा। जय हिंद। जय हिंद। और मैं इस आजाद हिंद फौज का सेना नायक हिंदुस्तान को आजाद करने में खुद अपने सिपाहियों की अगुवाई करूंगा। जय हिंद। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग के जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। चंचल सागर बिंद हिमालय नीला जमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए। सब तन पाए आशा सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। नाम्यार बड़े वक्त से आए हो। तुम तो शैंपेन पी सकते हो। नहीं सुभाष बाबू। क्यों? मार्क्सिस्टों को तो शराब पीने से कोई परहेज नहीं है। बहुत बुरी खबर है सुभाष बाबू। अभी यहाँ आते आते पता चला कि हिटलर ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया है। ये बुरी ही नहीं नाम्यार, भयानक खबर है। रूस के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने के हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। अब आजाद हिंद फौज क्या करेगी? हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ेगी और क्या। कहां से लड़ेगी सुभाष बाबू?
रूस के खिलाफ ये दूसरा फ्रंट खोलकर हिटलर ने जो हिमाकत की है, उससे ये सारे नाजी तो मारे ही जाएंगे। और अगर हम यहाँ रहे तो हम लोग भी बीच में पिसेंगे। ठीक कह रहे हो। हमें जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़ना होगा। लेकिन जाएंगे कहां? एशिया। What are you doing here in the dark? Talking to God? No, just putting my thoughts together. It appears that God loves to dispose of whatever I propose. Every time I'm within an inch of reaching my goal, something always comes in the way. When war broke out in Europe, mass civil disobedience in India would have crippled the British. Freedom was within our grasp. But Gandhiji had other plans. And I was forced out of the Congress. Then, I hoped to escape to Russia for help. But the communists had their own reasons to thwart my plans. And now, when we were getting ready with an army of liberation, Hitler decides to march into Russia. I'm sure things will work themselves out. No, Mimi. It's not so simple. The truth is, German support will never be more than symbolic. The Nazis under Hitler have no intention of helping us liberate India. But you knew what the Nazis were like. So why did you imagine that Hitler would help you? Not Hitler alone. Germany together with the Soviet Union. I know, Mimi. Nazism is intolerable. Probably worse than British imperialism. But as they say in Indian medicine, it takes a poison to kill a poison. Hey, Trot. Just the man I wanted to see. Your wish is my command, Herr Boss. Come. Thank you. The Italians are prepared to fly me to East Asia. Since the Third Reich is unable to recognize our government in exile, I must go to a place closer to India. Why are you in such a hurry, Herr Boos? His Excellency, Herr von Ribbentrop, has assured us that the Axis power will make a positive decision about India's freedom once the Soviet Union has been crushed. And when will that be? This year? Next year? Or till kingdom come? The Führer is confident that we will capture Moscow before the winter begins. Look, Herr von Trott, I have no time to lose. Sooner or later, the Americans will join the war. And that will only complicate matters. Well, you must be clairvoyant, Herr Boos. I came in to give you the news that Japan has attacked Pearl Harbor. A whole fleet of Yankee ships were blown up like sitting ducks off the coast of Hawaii. And Roosevelt has declared that America is at war. Oshima-san, to your success in the Pacific, I'm sure your victories will open doors of opportunity for our struggle. Bozo-san, the doors are already open for you. Let me show you something more. Hajime tamae. You have served the Emperor George VI to the best of your ability. But from today, we're all prisoners of war.
So I now, on behalf of the British government, hand you over to the Japanese government, whose orders you will obey as you have been doing ours. I, Major Fujiwara, promise you that the Japanese army will not treat you as prisoners of war, but as friends. I hand you over now to Captain Mohan Singh, COC, of the Indian National Army. मेरे फौजी भाइयों, मुझे फक्र है कि आज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सदर बाबू राज बिहारी बोस हमारे साथ हैं, जिनकी बदौलत ही आजादी के नेक और पवित्र काम के लिए इंडियन नेशनल आर्मी बन रही है। और सुना है बर्लिन में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी की है। देखिएगा, हमारी ये फौज ही अपनी जांबाजी से कल हिंदुस्तान की आजादी का परचम लहराएगी। इनकलाब जिंदाबाद! That's where I should be. Of course. You know, we have great dreams for Asia. And Rash Behari San is eagerly waiting for you to take over the Indian National Army. मैं सुभाष बोल रहा हूं। पूरे 1 साल से मैं खामोशी और सब्र रखे सही समय का इंतजार कर रहा था, पर अब वो घड़ी आ चुकी है। सिंगापुर में अंग्रेजों की हार का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य का पतन, और यहीं से शुरू होगा हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया सवेरा। आज इतिहास के इस दौराहे पर खड़े होकर मैं आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी की तरफ से ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक भारत खुद अपने भाग्य का विधाता नहीं... Try as he might, this fellow Bose will not get much out of Hitler. How can we be so sure, sir? I think we know Hitler better than he does. से शुरू होगा एशिया और पूरी दुनिया के गुलाम देशों की आजादी का सिलसिला। वंदे मातरम, जय हिंद। You sound good on the radio. Now that the people of India have heard you, they will want you to return. Yes. I will go back with our national army to liberate India. But the road to India now goes through Japan. I can't stay in this country a minute longer. But before you abandon Germany, perhaps you should give some thought to your family? Family? Me and your child to be. What? You mean... Yes. And I want to have a proper wedding ceremony for the sake of the baby. But we already belong to each other, Mimi. But a woman needs a ritual to feel married. I want to have a proper Hindu wedding with a fire and a Brahmin priest to bless us. Om Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwato Dabdhaso Aparita Sa Udbidha. How can this be a proper wedding? He's not a Brahmin, not even an Indian. He's a Prussian. Nambia, you are the Brahmin. Well, yes, but a Marxist Brahmin, you see, who knows no rituals. Herr Dr. Hessler is an Indologist, and he knows more Vedic rituals than most Brahmins do. Mimi, any wise man is a Brahmin. Not every Brahmin is a wise man. Proceed, Herr Doctor. Nambia, place your right hand on the bride's shoulder and repeat after me. Om Kanyam Kanakasampanam. Om Kanyam Kanakasampanam. Congratulations. Thank you, Herr von Trott. Herr Boots. Fräulein Schenke. Not Fräulein Schenkel. It's Frau Bose. Oh, anyway, I wish you both good luck. Thank you. Emily and I would be very happy if you could get our marriage registered. But don't mind saying so, perhaps you should be a little bit discreet. As long as Fräulein Emily was just your secretary, the authorities looked the other way, but now it's no longer possible. Is this your personal opinion, Herr von Trott, or of the Foreign Office? My opinion doesn't matter. Germany runs on the will of one man, the Führer, and you know what the Führer thinks of mixed marriages. What I do in my personal life is no business of the Führer. You can go and tell him that.
This was uncalled for. I'm sure you will understand, Fräulein Schenkel. You stand to lose your German citizenship if your marriage is registered. And if this matter becomes public, it will create an enormous scandal, both in Germany and India. Herr von Trott, I know where my duty lies. And the safety of my child. And the well-being of my husband. You must be a very happy woman, now that you have moved up in the world and can afford luxuries that are out of the reach of ordinary Germans. You might think that I married him to share his privileges. I would have done so even if Herr Bose was a poor exile living in an attic or a prison cell. Really? Yes, really. Has he gone? Yes. Don't you think that it would be better for me and the child to go back to Vienna and stay with Mutti? My staying here as your wife will only come in your way. Mimi? I know your feelings for me. But I will never come in the way of your first love. फिरता रहा मैं देश देश, मन में उसे बसाए, उसके इर्द गिर्द जीवन के लम्हे मिटाए बनाए. Hi, Hitler! Please. May I make an observation if the Führer has no objection? Yes, of course. Perhaps the Führer has been misinformed about India and Indians. Really? What have I said that upsets you? In your book Mein Kampf, you have written, England will lose India only if it allows its administrative machinery to be dominated by Indians.